Okay, so good afternoon, everyone. Today we are going to learn about the NCBI blast, how we can perform the blast for identification of bacterial culture. So initially, when you will give your culture for the 16 as RNA sequence, then you will get a file format in the FASTA file. Usually, they are giving the FASTA file format, which is nucleotide sequence. So after performing blast with the NCBI site, you can recognize whether your protein, I mean, whatever sequence you have isolated from bacteria belongs to the which bacterial species, and then you can easily identify. So first of all, I will type on the Google or any web browser, that is NCBI. Okay, so this current page was for last one. Let's type it again for the NCBI. You can search directly here. So then we will switch to the home page, which is the welcome to the NCBI blah. Okay, so here I have already created my account with my number, and if I click on the my NCBI, it will give me a history about how many times I have used NCBI and for what purposes. So first one is about the bibliography. Here I have done the nucleotide blast in the recent activity which was recorded in the PMC. Then if I wanted to create a new CV, then the history which I have done here, protein and nucleotide blast I have done earlier, and we will do it again today. So this is all about the NCBI sequence information. So now if we go return to the page, here there are different kind of resources are mentioned, like chemicals and bioassays. So you can perform any chemical and bioassay. If you want to download the structure of any chemical compound, then you can download it from the PubChem compound, where you can type the name of the structure and easily it is downloadable. Then that is the DNA RNA sequence, that is which we can perform with the BLAST basic local alignment search tool, BLAST standalone e-utilities, then gene bank, then two BLAST. It means if you want to convert your sequence from DNA to RNA, RNA to DNA, primer BLAST PopSet, then a reference sequence of the gene, all of you. Then data and software here are available mostly for your search. I can suggest you for the BLAST, it is there. Then gene bank submission protocol, then a vector alignment if you want to perform the alignment tool, domain and structure, gene expression and study if you want to study the homology gene model, genetics and medicine, which is related to the different kinds of thing. Okay, and genomes and map, database of genomic structural blast, genome project if you want to create, if you want to submit your genome sequence, that is of the whole genome sequence. Then a genome data weaver if you want to weave your whole genome. Then different things are there. Homology modeling, which we have seen in the comparison genomics. So here also we can apply the homology modeling and study our gene structure. The protein literature, if you want to use NCBI database, which is one of the most important source for any database, then you can find different handbook, manual, taxonomy if you want to find taxonomy number, variations in SNP, single nucleotide polymorphism, sequence analysis again. So this is all about the NCBI and the tools we can use to perform. A to Z list are also already mentioned here, and popular resources are also mentioned over here. Okay, so now we want to perform the NCBI blast. So going on that page, we are on the home page of the NCBI blast. First is the nucleotide blast, another is a protein blast. Usually we can perform these two blasts, but if you are having a nucleotide sequence and if you want to convert it into protein, okay, because you want
wanted to know that whether your nucleotide result or protein result are in both comparison simultaneously or not. अगर आप जानना चाहते हो कि आपको दोनों में सिमिलर रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, तो आप न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन में कन्वर्ट करके ब्लास्ट एक्स कर सकते हो. अदरवाइज आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है पर आपको ये जानना है कि उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसा आता है, तो आप ब्लास्ट एन कर, दैट इज टी ब्लास्ट एन कर सकते हो. अदरवाइज फॉर द जो अगर आपको सिर्फ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का करना है या फिर ओनली फॉर प्रोटीन, देन यू कैन स्विच डायरेक्टली टू द न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट और प्रोटीन ब्लास्ट. Okay, so here I am doing blast and that is for the nucleotide blast, and you can find here is the option if you want to upload the file, but I am having whole genome sequence of the file, so I will just take some data over here. And will paste it, and then when you will scroll it down here as a highly similarity and click on the blast button. So it will take few minutes till that we can see the protein blast. Okay, so here is our result for the blast sequence which I have done. The color key represent if a sequence is more than 200% of the similarity. Here is the description of it is showing maximum score. Our total score and maximum score should be matched. Oh, query cover 100%, e value is 0, and percent identity is 99%. You can see here maximum we are getting score with the Klebsiella pneumoniae, which is exact value because I know that my culture belongs to the Klebsiella pneumoniae species. Here is the query gene details. ये सपोज आपका जो पहली सीक्वेंस है क्वेरी की न्यूक्लियोटाइड की ये थी जिसमें 16 न्यूक्लियोटाइड है, उसके प्लस एंड माइनस 10, तो वो कौन से जब आप ब्लास्ट कर रहे हो तो सामने सपोज क्लैप्सिला निमोनिया SN147, तो वो उसके ये जो मेंशन है नंबर 31977 उसके साथ में मैच हो रही है. इसका मतलब आपके क्वेरी सीक्वेंस जो आपने ब्लास्ट किए वो और सामने वाले के बैक्टीरिया की सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस यहाँ पे मैच हो रही है. ओके, सो दिस इज हाउ यू रीड. देन आइडेंटिटीज कितनी मैचेस, ऑलमोस्ट 99%, और उसको हिट्स भी काफी अच्छे मिले हैं, गैप बिल्कुल भी नहीं है. ओके, देन फिर ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ उन्होंने कंपेयर किया है. ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स के साथ में उन्होंने कंपेयर किया है. एंड देन यू कैन फाइंड इट. हियर इज द डाउनलोड ऑप्शन. अगर आपको पूरा डेटा डाउनलोड करना हो, अपने मतलब प्रोसेस दिखाना हो किसी भी चीज में या फिर अपने थीसिस के डायजेटेशन में, देन यू कैन यूज इट. ओके, so now jumping to the protein blast. See, if you will do the protein blast, the protein blast P will be highlighted. For protein blast, I am taking protein sequence. Here is my protein sequence which I have taken it earlier. I have chosen it and then I will click on the blast button. Again, this can take few seconds or minutes depending upon the sequence length of the protein. Okay, so here is the result of our blast protein, जहाँ पे बहुत सारे हमें results मिले. सेम एज फॉर द ब्लास्ट हीट. उन लोगों ने मेंशन किया है कि साइंटिफिक नेम, डिस्क्रिप्शन दिया है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करता है. ई वैल्यू यहाँ पे भी हमें 0 मिल रही है, और क्लैप्सिला के साथ में उसका अगेन क्वेरी कवर 100% हो रही है. इट मीन्स कि हमारा जो बैक्टीरिया है इट बिलोंग्स टू द क्लैप्सिला जीनस. एंड फॉर द यहाँ पे वो क्लैप्सिला ग्रीमोंटी बता रहा है. यस, बिकॉज मैंने दूसरा कल्चर लिया था, इट इज क्लैप्सिला ग्रीमोंटी. सो ऐसे अगर आपको कई बार कंफ्यूजन हो तो आप अलग तरीके से प्रोटीन ब्लास्ट और न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करके देख सकते हो, जस्ट टू क्लियर एंड गेट द बेटर आइडिया.
डिस्क्रिप्शन एंड देन ग्राफिकल समरी। जैसे सपोज यहाँ पे आपकी क्वारी सीक्वेंस थी, यहाँ पे उन्होंने कहाँ पर हिट हो रही है वो मेंशन किया है स्पेसिफिक हिट्स के साथ, और उसकी सुपर फैमिलीज कौन सी है। ओके, देन अलाइनमेंट। अब जो अलाइनमेंट है वो उन्होंने मेंशन किया है कि ये कल्चर के साथ में यहाँ पर अलाइनमेंट हो रहा है जो हमारी प्रोटीन सीक्वेंस थी, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस थी, उसके साथ में, as we have seen earlier. Taxonomy, so obviously it belongs to the, I mean, class that was Enterobacteriaceae, and genus that is Klebsiella, and here it is showing Klebsiella species M51. Why? Because I have already submitted this species in the NCBI, इसलिए जब मैंने उसका ब्लास्ट किया तो उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके, सो उसका स्कोर 630 बेटर एंड क्लैप्सुला स्पीचिंग M51 हिट्स। सो दीस आर द थिंग्स जो सबसे बेस्ट है, और उसका सबसे हिट्स हमें उसके साथ M51 के साथ में मिल रहा है। So this is all about your protein blast and nucleotide blast. You can perform your own blast file by collecting the data and find your sequence. Thank you.